Number third, if our driver did not drive so fast, if our driver did not drive so fast, we would not be in hospital right now. अगर हमारा ड्राइवर तेज़ नहीं चलाता तो इस वक्त हम हॉस्पिटल में नहीं होते. Alright, number 4, the tourist would not be lost. The tourist would not be lost. Tourists जो हैं वो गुम नहीं हो जाते, या यू कैन से कि लॉस्ट नहीं हो जाते, गुम नहीं जाते एक जगह से. इफ़ दे हैड एन अपडेटेड मैप ऑफ द एरिया, अगर उनके पास अपडेटेड मैप होता उस एरिया का तो वो क्या होता, वो गुम नहीं होते. इफ़ दे हैड द टाइम, इफ़ दे हैड द टाइम, अगर उनके पास टाइम होता, दे कुड विजिट ऑल देयर फ्रेंड्स, दे कुड विजिट ऑल देयर they could visit all their friends. Alright, number 6, if money grew on trees, अगर पैसे दरख्त पर पैदा होते, अगर पैसे दरख्त पर पैदा होते, everyone would be rich, हर कोई अमीर होता. Our school would produce capable leaders. Our school produce capable leaders if she Our school would produce capable leaders if the students and teachers paid due attention. If the students and teachers paid due attention. Alright. Number 8, her idea would be accepted. Our idea would be accepted if she presented it well. उसका आइडिया बहुत अच्छा, जो उसका आइडिया जो है वो एक्सेप्ट हुआ जाता, अगर हो लिया जाता या एक्सेप्ट किया जाता अगर वो उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती. ठीक है. सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1. नाउ लेट्स टर्न टू पेज नंबर next page. This exercise number 2. I will read the exercise for you. It has the same second conditional sentences with this, and I will tell and you will write down the answers. I will not share the answers this time. Alright, now let's read the first word. Here in exercise number 2, work in pair and complete the following sentences. Alright, let's suppose as the first example के साथ first 2 examples दिए. Now let's read the first example. If we had a computer, अगर हमारे पास computer होता, then dash, and we use the word finish. So what would we do? We could finish the work quickly. Alright, we could finish the presentation. Alright, or you can say अगर हमारे पास होता, so we could finish the painting, the drawing, the presentation, anything that is done on computer, you can write your sentence. If we had a computer, we could finish the work quickly. हम जल्दी ही काम कर सकते, हम जल्दी काम ख़त्म कर सकते थे. ठीक है, अगर हमारे पास कंप्यूटर होता तो हम जल्दी काम ख़त्म कर लेते. या यू कैन मेक अनदर सेंटेंस. इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर वी कुड फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन. तो हम कोई और भी इंफॉर्मेशन और भी मालूमात हासिल कर सकते थे. डजेंट मैटर्स कि आप यही यूज़ करें, आप ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं वर्ब, और आप अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना सकते हैं टू इम्प्रूव योर सेंटेंस मेकिंग. Number 2, we might see a bear dash go. We might see a bear. हम जो है वो देख सकते थे, शायद कि हम देख पाते किसको, bear को. If we went further in the woods. Further मतलब आगे की तरफ. Woods in this sentence, woods means forest, जंगल. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम और जो है जंगल में जाते तो हम किसको देख सकते थे, बेयर देख पाते. ठीक है, वी माइट सी अ बेयर इफ़ वी क्लाइंब ऑन द ट्री. अगर हम दरख्त पे भी चढ़ जाते तो हम बेयर को देख पाते. सो एनी सेंटेंस डू यू थिंक दैट यू कैन मेक, राइट इट डाउन. ठीक है, I want you all to make this A to S sentences all by yourself, because now I think you have more prepared and more understood what are conditional sentences. Now let's read the first example. If she studied harder. If she studied harder. ठीक है, हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बनाया और नेक्स्ट में वुड के साथ हम लगाएंगे या वुड कोड उसके साथ लगाएंगे, गेट यूज़ करेंगे. शी कुड गेट गुड ग्रेड. शी कुड गेट गुड ग्रेड्स. इफ़ शी स्टडीड हार्डर शी कुड गेट गुड ग्रेड्स. ठीक है, और इफ यू थिंक दैट यू कैन अनदर सेंटेंस, you may write your own sentence.
If you grew multiple crops on your land, if you grew, अगर आप multiple different multiply कर जो है वो फसलें उगाते हैं, so dash तो earn, you have to earn, so you would earn enough money, so you would earn enough money. People would fly, लोग उड़ते if they had wings, that's so easy. If I own a camera, अगर मेरे पास कैमरा होता, so I would take a picture of beautiful nature. They might win the match, if they worked hard. If Abdullah lived with his family, he would save the money. Next, my family would move to the city dash. My family would move to the city if the city government would allow us to live there. Alright, the next sentence is she could become a good doctor. Let's read again. My family would move to the city if the city government allow us to live there. Number 8, she could become a good doctor. She could become a good doctor if she succeeded to get admission in a medical college. She could become a good doctor if she could succeeded to get admission in a medical college. Alright, you have to write these blanks in your notebook. This exercise number 1 and 2, and so as exercise number 3. Here are some conversations between two boys. Now let's read exercise number 3. Complete the following dialogues by using some or all of the words given below. You may use your own words as well. You can use your own word or use these words any number of time. It says कि आप ये numbers use कर सकते हैं words in the blue box जितनी दफ़ा चाहें, any number of time, जितनी दफ़ा आप चाहें आप उसको use कर सकते हैं. The first one has been done. As an example, do this exercise in your notebook. ठीक है, ये exercise आपको अपनी notebook में करनी है, register जिसमें आप ये काम copy करते हैं. Sorry, let's begin reading. Zahid, we had to call off our picnic plans first. We decided to go to the seaside, but we couldn't do so. Call off means ख़त्म कर देना, end कर देना, postpone कर देना, cancel कर देना. We had to call off our picnic plans first. We decided to go to the seaside, but we could not do so. हम ये नहीं कर सके. ठीक है, हमने क्या किया? We had to call off मतलब past tense लगाया, condition sentences. If we decided to go for the seaside, but we couldn't do so. हमने plan किया था पर हम जा नहीं सके. Now let's read the conversation between Qasim and Zahid. Qasim, why, if we went to the seaside, Salim would not come. अगर हम पानी मतलब सी साइड जाते तो सलीम नहीं आ पाता. ठीक है, अगर हम वहाँ जाते तो ही वुड नॉट कम. अगर हम वहाँ जाते तो वो नहीं आ पाता. तो कासिम, वाई वुड सलीम नॉट कम? क्यों नहीं आ पाता? If he came with us, अगर वो हमारे साथ आता, if he came with us, he might get sick. वो बीमार हो जाता. कासिम, you don't fall sick when you swim. आप बीमार तो नहीं होते जब आप स्विम करते हो. जाहिद ने कहा, सलीम्स हार्ट इज़ वीक. सलीम का दिल कमज़ोर है. he could fall sick. वो आराम से बीमार हो जाता. if he swam, अगर वो तैरता या स्विमिंग करता तो वो बीमार हो जाता. कासिम, you could have gone to the park. so he says कि आप पार्क जा सकते हैं, बाहर जा सकते थे. So Zahid said, Tahir and Salman said if we went to the park, they would not join us. Now, Tahir and Salman said, अगर आप पार्क जाओगे तो मैं नहीं आऊँगा. ठीक है, मैं नहीं आ सकूँगा या मैं नहीं आता. Qasim, then what? Zahid, someone suggested that we visit the museum. किसी ने कहा कि चलो म्यूजियम चलते हैं. However, half the group objected and said that if we went there, they would not join.
ठीक है, हाफ ऑफ द ग्रुप्स, अपने किसी ने कहा कि म्यूज़ियम चलते हैं, बट हाफ ऑफ द ग्रुप ने था, उन्हें ऑब्जेक्शन था, लाइक दे आर नॉट एग्रीड. सो उन्होंने कहा कि इफ़ यू वेंट देयर दे वुड नॉट जॉइन अस. कासिम, व्हाई? They said that they could not enjoy their self. They could not enjoy their self. They could not enjoy their self if we just went there. Obviously, the museum is not a place that you go and enjoy and have fun. So Qasim said they were right. If you wanted to have fun, then you would not get that inside the म्यूज़ियम. कह रहा है कि हाँ, अगर आप वाकई फ़न करना चाहते हैं तो म्यूज़ियम के अंदर तो आपको कुछ फ़न करने नहीं देगा. ऑब्वियसली वी नीड टू बी क्वाइट एंड लिसन वट एवर हैज़ बीन टोल्ड ओवर देयर. Zahid, so if we had to please everyone, we would not enjoy on a place to go. Hence, the plan was dropped. Alright, these are the conversations that you have to complete in your notebooks. And here is exercise number 4. It has very simple and very easy for you, so you can write down in your notebooks. Alright, so let's read question number 4. Exercise number 4. Work in pairs and correct the punctuation and capitalization in the following passage. Here are some tips on how to do it. Okay, you know what are the punctuations, capitalizations, full stops, and comma if needed. Step 1. Read each paragraph and identify where each sentence is getting completed. हर सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा है. अगर दो सेंटेंस में एक ही चीज़ के मुतालिक बात हो रही है तो हम उस पर दोनों को अलग अलग सेंटेंस नहीं करेंगे. हम सेंटेंस में जो है कॉमा से जो है सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, एंड इन द एंड वी विल राइट द फुल स्टॉप. मार्क the part, read again to see whether it's a question or a statement. दोबारा पढ़ें इसको, फिर बताएं कि ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है. ठीक है, इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन पुट अ क्वेश्चन मार्क. अगर सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अदरवाइज पुट अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप लगाएंगे. दैट इज़ वेरी इजी है ना. Number 2, read each sentence again to see where comes comma and the apostrophe are needed. ठीक है, आप बताएंगे कि कहाँ पर apostrophe और कॉमा की ज़रूरत है. स्टेप नंबर 3, चेक एंड पुट द कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड. कैपिटल लेटर्स की देखेंगे कहाँ कहाँ नीड होती है. आप सबको पता है कैपिटल लेटर्स हम कब यूज़ करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट डेज, हम डेज ऑफ वीक्स, मंथ ऑफ ईयर्स. व्हेन वी राइट अबाउट एनी प्लेसेस, द कंट्रीज, the unique things. In fact, when we write about anybody, like he's a Mr. Dr. Imran, so we will write the D and of the doctor and Imran of the I of the Imran, we will write in the capital letters like that. And number 4, read the whole passage again to check any errors. Alright, this is the homework. It is very easy for you, so you can rewrite this sentence, rewrite these paragraph in your notebook and write down the proper punctuation on it. Alright, students, till your next lecture. Allah Hafiz.